शीर्षक आर्टेमिस में पैड के लिए पथ, लॉन्च और रिकवरी। परिचय। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मिशन आर्टेमिस प्रथम चंद्रमा पर मानवता की वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली एसएलएस और ओरियन अंतरिक्ष यान का परीक्षण करना है, जिससे भविष्य के चंद्र अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस लेख में हम जटिल यात्रा में तल्लीन होगा आर्टेमिस में लॉन्च पैड के लिए अपनी विधानसभा से ले जाता है और अंत में एक सफल मिशन के बाद अपनी वसूली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग। आर्टेमिस प्रथम की यात्रा फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर शुरू होती है। एसएलएस रॉकेट, ओरियन अंतरिक्ष यान और लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम सहित प्राथमिक घटकों को वाहन असेंबली वीएबी में सावधानीपूर्वक एकीकृत किया गया है। इंजीनियर और तकनीशियन एक दुर्जेय अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन बनाने के लिए इन घटकों को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करते हैं। एकीकरण के बाद कठोर परीक्षण प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती हैं कि सभी सिस्टम निर्दोष रूप से काम कर रहे हैं। इस चरण में कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि मिशन की सफलता विस्तार पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने पर निर्भर करती है। लॉन्च पैड के लिए रोल आउट। एक बार एकीकरण और परीक्षण पूरा हो जाने के बाद पूरी तरह से इकट्ठा आर्टेमिस आई अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड की अपनी यात्रा के लिए तैयार है। यह रोल आउट एक सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड घटना है, क्योंकि बड़े पैमाने पर एसएलएस रॉकेट को क्रॉलर ट्रांसपोर्टर के ऊपर ले जाया जाता है। इस धीमी जानबूझकर क्रॉल टू लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B में कई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि वाहन लगभग 4 मील की दूरी तय करता है। लॉन्च पैड पर आर्टेमिस आई अंतरिक्ष यान का आगमन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इसे लिफ्ट ऑफ के एक कदम करीब लाता है। प्री-लॉन्च तैयारियां। लॉन्च पैड पर मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अंतिम तैयारी की जाती है। यह अंतरिक्ष यान मोबाइल लॉन्चर से जुड़ा है, जो बिजली, कूलिंग और संचार सहित महत्वपूर्ण समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। तकनीशियन पूरी तरह से जांच और निरीक्षण करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सिस्टम सही काम के क्रम में हैं। उल्टी गिनती की घड़ी अपनी अंतिम उल्टी गिनती शुरू करती है और मिशन नियंत्रक मिशन के हर पहलू पर नजर रखने के लिए तैयार रहते हैं। लिफ्ट ऑफ। सत्य का क्षण आर्टेमिस के रूप में आता है में लिफ्ट ऑफ करने के लिए नीचे गिना जाता है। शक्तिशाली एसएलएस रॉकेट जीवन के लिए दहाड़ता है, जो 8 मिलियन पाउंड जोर पैदा करता है। अंतरिक्ष यान के आकाश में चढ़ते ही लॉन्च पैड काम उठता है। आर्टेमिस आई मिशन अंतरिक्ष यान के लिए बल्कि एसएलएस रॉकेट के लिए भी एक महत्वपूर्ण परीक्षण है, जिसे भविष्य के चंद्र मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सफल लिफ्ट ऑफ आर्टेमिस कार्यक्रम की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिशन टू ल्यूना। लिफ्ट ऑफ के बाद आर्टेमिस आई चंद्र की कक्षा में अपने मिशन पर निकलती है। इस चरण के दौरान अंतरिक्ष यान चंद्रमा की यात्रा करता है,
यह सुनिश्चित करने के लिए युद्धाभ्यास और परीक्षणों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करता है कि इसकी प्रणाली इच्छित रूप से काम कर रही है। हालांकि यह मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं ले जाता है, लेकिन यह ओरियन अंतरिक्ष यान की क्षमताओं का प्रदर्शन करने और भविष्य के मानव मिशन के लिए तैयारी करने में आवश्यक है। पृथ्वी और वसूली पर लौटें। चंद्र की कक्षा में एक सफल मिशन के बाद Well, if you're just joining us, welcome to NASA's Kennedy Space Center, where we just watched Artemis I launch, our first step towards our next adventure into deep space. With Orion off the ground, Mission Control in Houston takes the reins. Our nation is returning to the moon. And we have worked hard as a team. You guys have worked hard as a team for this moment. This is your moment. It is not by chance that you are here today. So I want you to look around at this team and know that you have earned it. You have earned your place in the room. You've earned this moment. You have earned your place in history. The successful launch of SLS is just the beginning. Orion will spend the next several weeks journeying around the moon, sending flight data back to teams here on Earth for real-time analysis. During its mission, Orion reached speeds traveling about 30 times as fast as the speed of sound. This dramatic video of the Earth-Moon transit that took place showed and punctuated the fact that we were pressing away from our home planet to a distance of some 268,000 miles away from Earth, further than any human-rated spacecraft had ever traveled, for a spacecraft designed to return humans to Earth, eclipsing the mark set by the Apollo 13 vehicle back in 1970. After several weeks of flight, it was time for Orion to return home. A half-century later, NASA's newest moon explorer, the Orion spacecraft, is barreling its way back home after circumnavigating the moon and beyond in an elliptical distant retrograde orbit. Now less than 2 hours away from splashing down in the Pacific Ocean west of Baja, California, to complete its shakedown mission. Like the Apollo missions of the past, Orion will have to endure incredibly high temperatures during re-entry of Earth's atmosphere. A journey that began with the power of the launch of the Space Launch System 25.5 days ago, about to reach its final minutes in the searing heat of re-entry, where temperatures around Orion will build up to 5,000 degrees Fahrenheit. While re-entering Earth's atmosphere, the spacecraft slowed to about 300 miles per hour. As it continued its descent, Orion's parachute system, containing 11 total parachutes, deployed once it reached approximately 9,000 feet and a speed of about 130 miles per hour. And there it is, high over the Pacific, America's new ticket to ride to the moon and beyond now in view. Orion under its chutes descending toward splashdown.
These parachutes help slow the crew module to a much more manageable speed, roughly 20 miles per hour, for a water landing off the coast of California. Splashdown. From Tranquility Base to Taurus Littrow to the tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion, back on Earth. We've got a perfect view, a front row seat to the Orion splashdown. It's simply beautiful out here. That is a human-rated capsule that went around the moon and returned and is now in the Pacific Ocean. I think I can speak for the whole dive team that we're honored to be part of history and to be part of something so monumentous, and just ready and excited to go out and do this. When Orion was deemed safe to approach, team members jumped into the water and attached hardware that steadied the capsule. What we do at NASA really is all about collaborations, and the collaborations that we've had with the Department of Defense in particular over the past many years, their hard work and their dedication as they went through a great deal of planning, hardware development and processes, and a lot of practicing to get to this point and make it look easy. And that team, made of a combination of NASA and Department of Defense personnel, has put in years of work to make sure that they were ready. Melissa Jones, the recovery director, just came from outside the ship's control center where she was monitoring and, of course, managing her team in the midst of this recovery. So, Melissa, thank you for being here. Thank you for having me. It's been a long time coming. We've been working this mission for a while, and we've done a ton of training. And every time you do training with a mock-up capsule, you don't have any of that. You don't have parachutes. You don't hear it coming back to the atmosphere, the sonic booms and all of that kind of stuff. And today that actually happened. It's just amazing. You know, this mission, this spacecraft and this team exceeded all expectations. For the last 25.5 days, we've been every day looking ahead to the next flight to see how we can improve on where we are today so that we can fly a safe and successful mission with our astronauts next time around. Once stabilized, the team secured the spacecraft with hardware and rope assemblies and towed it to the Navy ship. The dive team then connected Orion to a series of ropes from inside the back of the ship, known as the well deck, to safely and securely pull the capsule inside. With Orion safely secured inside the ship, teams made their way to Naval Base San Diego, where the capsule was offloaded and prepped for its cross-country trip back to its home base, Kennedy Space Center. This is really the start of a campaign of several missions to get humans back to the moon and beyond to Mars. So there's still a lot to be done, and this is just the beginning. Kennedy just stunned everybody with the Apollo generation. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out. And said that we were going to achieve what we thought was impossible. Of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Many things have happened since, but we knew we were going back. This is the program of going back to the moon to learn, to live, to invent, to create in order to explore beyond. So it's a new day. A new day has dawned, and Artemis generation is taking us there.